Hello everyone, hope you are doing well. Today's we have the topic conjunctivitis. So here we can see about the definition of conjunctivitis, causes of conjunctivitis, sign and symptom of conjunctivitis, diagnosis of conjunctivitis, and finally management and treatment of the conjunctivitis. Alright, so it is the important topic as exam point of view and as a practical also. Alright, so now let's get start. So, what is the definition? Conjunctivitis is the inflammation of the conjunctiva. In simple word, conjunctivitis is the inflammation, swelling of the conjunctiva. कंजक्टिवा में आपका इन्फ्लामेशन होना आपकी आइस की एनाटॉमी में जो आपकी कंजक्टिवा होती है तो कंजक्टिवा में आपका स्वेलिंग होना इन्फ्लामेशन होना इट इज नोन एज द कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवा व्हाट इज कंजक्टिवा दिस इज द थिन ट्रांसल्यूसेंट elastic tissue layer with valvular and palpebral portion. Okay, so conjunctiva क्या है? What is conjunctiva? This is the thin translucent elastic tissue layer with valvular and palpebral portion. Valvular क्या है? Valvular lies the outer surface of the globe, the limbus, junction of the sclera and cornea. Okay, so valvular what is the valvular? Valvular line the outer surface of the globe. This is the line outer surface of the globe lies near the outer surface of the globe to the limbus, where is the junction of the sclera and cornea. It is located where the junction of the sclera and the cornea. Next है palpebral क्या है? दिस द कवर द इनसाइड ऑफ द आईलिड्स, जो कि इनसाइड ऑफ आईलिड्स से कवर करता है. टू लेयर आर देयर. फर्स्ट इज द एपिथेलियम सबस्टेंसिया एंड प्रोफिडिया. there are two layer. First epithelium substantia and porphyria layer. And what is the anatomy of the eyes? Here you can see. Okay, there is the vulvar conjunctiva, palpebral conjunctiva, epislaria, sclera, vulvar conjunctiva, sclera, uvulva. Right, so this is the anatomy of the eye. You understood, you know about that at the first year. Now classification of the conjunctivitis. The here is the first infectious, infection की वजह से होता है. Then viral, bacterial, and hyperacute, acute, and chronic. A bacteria goes further. There is the three division. First is the hyperacute, second is the acute, third one is the chronic. फर्स्ट इन्फेक्शियस में आपका इधर इट इज वायरल और बैक्टीरियल. अब अंडर दी बैक्टीरियल इट इज द हाइपर एक्यूट, एक्यूट और दी क्रॉनिक. नॉन इन्फेक्शियस में लाइक एलर्जिक, टॉक्सिन्स, केमिकल्स, फॉरेन बॉडी, ट्रॉमा एंड न्यूप्लास्ट. ओके, सो अंडर दी नॉन इन्फेक्शियस किस किस कॉजेस की वजह से, किस किस सब्सटेंस से हो सकती है? तो इट इज द एलर्जिक, एलर्जी की वजह से होना, टॉक्सिन की वजह से होना, केमिकल्स की वजह से होना, फॉरेन बॉडी की वजह से होना और ट्रॉमा की वजह से होना या न्यूप्लाज्मा की वजह से होना. सो दिस ऑल condition are the non-infectious. Either infectious may it may be viral, it may be bacterial. It may be bacterial under the three categories. First hyperacute, second the acute, and third one is the chronic. Got it? So shall we move ahead? Okay, next है prevalence. प्रीवलेंस इसका जो रेट है बैक्टीरियल दिस इज द 40%, इन अडल्ट में, पीडियाट्रिक में दिस इज द 80%. वायरल का जो प्रीवलेंस रेट है अडल्ट में 36%, पीडियाट्रिक में 13%. एलर्जी का सिवलो 24% एंड 2% इन दी पीडियाट्रिक में. एंड नॉन डायग्नोज जैसे जो कि डायग्नोज नहीं हुई है इंक्लूड द एलर्जीज 24% एंड पीडियाट्रिक में 5%. दिस इज द प्रिवलेंस रेट ऑफ conjunctivitis. Now we are talk about the viral conjunctivitis. Most common viral cause is adenovirus. Okay, this is the most common case होता है, most common जो virus होता है वो cause करता है. This is the adenovirus, elect enterovirus. Adenovirus and enterovirus, it is known as the HSV, right? Adenovirus or enterovirus.
occur in the community, epidemics, schools, workplace, physicians office. अब ये किस किस जगह पर आपको हो सकती है, आपको एपिडेमिक्स, इसका रेशियो क्या है, रेट क्या है, किस किस टारगेट लोकेशन पर होती है, स्कूल पर, वर्क प्लेस पर, फिजिशियंस के ऑफिस में आपको हो सकती है। यूजुअल मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, यूजुअल मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है किस वजह से होती है, तो कंटामिनेटेड फिंगर की वजह से, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को टच करने की वजह से, स्विमिंग पूल और वाटर की वजह से। ओके, सो दीज आर दी यूजुअल ऑफ ट्रांसमिटर, किस किस वजह से आपको हो सकती है, फिंगर कंटामिनेटेड, आपका फिंगर है वो आपने आइस से टच कर लिया, इस वजह से हो सकती है, कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को टच किया और वो आपके आइस में आपने टच कर लिया, स्विमिंग पूल के वाटर से आपको हो सकती है, कंटामिनेशन वाटर की वजह से भी आपको हो सकती है। गुड इट, सो नेक्स्ट मूव, आई होप यू अंडरस्टूड। Next है viral conjunctivitis. Viral conjunctivitis, first is the presentation unilateral or the bilateral. It is the unilateral हो सकती है, मीन्स दोनों आइस में हो सकती है, दोनों साइड हो सकती है, और एक बायलेटरल भी आपको हो सकती है। इसमें क्या होता है, एक्यूटली रेड आइस, आपका आइस का रेड होना, वाटरी और म्यूको सीरियस होना, डिस्चार्ज होना, कीमोसिस होना, टेंडर प्री एक्यूरिकुलर होना, नोड होना, वर्निंग होना, सैंडिंग होना, ग्रीटी होना, फीलिंग इन द आइस, रेयरली फोटोफोबिया होना, मीन्स डबल विजन होना, ब्लड विजन होना, मे बी पार्ट ऑफ द वायरल, इन केस यदि वायरल है तो ये हो सकता है आपका प्रोड्रोम, एडिनोपैथी हो सकती है, फीवर हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, एंड कफ एंड राइनोडिया आपको हो सकता है। सो ऑल दीज आर दी कनेक्टिविटी कोरिलेट दिस सिम्टम, जो कि आपको एडिशनल सिम्टम आपको हो सकते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, तो बैक्टीरियल के केस में क्या क्या हो सकता है, तो कॉमन कॉजेस इन दी न्यूनेट्स में आपका क्लाइमेडिया होना, ट्रैकोमेटिस होना, नाइजीरिया गोनोरिया होना, इन दी चिल्ड्रन में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होना 80% केसेस में, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया होना है 20% केसेस में, एंड नोरा सेला कैटा कैटरेलिस, नोरोजोला कैटेरेलिस कॉन्कुरेंट होना, ओम सीन इन दी 25% में, इन अडल्ट स्टेफाइलोकोकस और इन अडल्ट की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस है जो कि कॉज करता है, चिल्ड्रन में आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, मोरलेक्सा कैटर हेलिस हो गया, कॉन्कुरेंट हो गया, ये सारे आपके कॉज करते हैं। इसमें 80%, 20% एंड 25% इनका बैक्टीरिया वायरस का आपका रोल होता है कॉज करने के लिए। नेक्स्ट है अक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। व्हाट इज अक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस? प्रेजेंटेशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, रेड आई होना, म्यूकोप्लूरेंट और प्लूरेंट डिस्चार्ज होना कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे, वर्निंग होना, इरिटेशन होना, माइल्ड कीमोसिस होना। क्या क्या होना इसमें? यूनिलेटरल हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, एक आइस में हो सकता है, दोनों आइस में हो सकता है, म्यूकोप्लूरेंट और प्लूरेंट का कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होना थ्रू आउट द डे, पूरे डे में, वर्निंग होना, इरिटेशन होना, माइल्ड कीमोसिस होना, न्यू हेड्स में क्या होना, सिम्टम्स लाइक अ फेयर 4 to 14 days after the birth, inclusion conjunctivitis or of the newborn, and highly contagious की वजह से spread by the direct contact और by the contaminated object। अब जो कंटाजियस, हाईली कंटाजियस कैसे हो सकती है? स्प्रेड हो सकती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट स्प्रेड होना, एंड कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट की वजह से भी स्प्रेड हो सकती है। कोई ऑब्जेक्ट आपने टच किया और आपने आइस को टच कर लिया तो एक इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इटियोलॉजी नाइजीरिया स्पेसिस, नाइजीरिया के जितने भी स्पेसिस है उसकी वजह से हो सकती है, मोस्ट कॉमनली एंड नाइगोरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट इसमें जो प्रेजेंटेशन, दिस इज दी प्रोफ्यूज, मीन्स इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? प्रोफ्यूज प्लूरेंट डिस्चार्ज होना विद द रैपिडली प्रोग्रेसिव सिम्टम्स एंड ऑफ मार्क कंजक्टिवाइटल इन्फेक्शन, इरिटेशन होना, टेंडरनेस होना टू द पाल्पेशन, कीमोसिस, लिड स्वेलिंग होना, एंड टेंडर प्री auricular adenopathy होना। Alright, so this is the sign and symptom. What is the sign and symptom? Profuse pleural discharge होना with rapidly progressive symptoms होना। Just a minute.
Next is the ophthalmia neonatum, gonococcal ocular infection with bilateral discharge 3 to 5 days after birth from the vaginal transmission. Sexually active teens transmitted from the genitalia to the hand to eye, commonly see concurrent urethritis. Next is sight threatening. Alright. So this is the reason. First is the ophthalmia neonatum. This is the gonococcal ocular infection की वजह से with bilateral discharge होना 3 to 5 days after the birth. वेजाइनल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. सेक्सुअली एक्टिव टीन्स की वजह से हो सकता है, सेक्सुअली एक्टिव टीनेजर है. ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जेनाइटिलिया टू हैंड टू आई, कॉमनली सी कॉन्करेंट यूरेथ्राइटिस, स्लाइड थ्रेटनिंग आपकी हो सकती है, राइट. सो दिस इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. क्रॉनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इस वजह से हो सकती है. सो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है आपका स्टेफाइलोकोकस स्पेसिस की वजह से, मोर कॉमन इन द अडल्ट एंड पेशेंट विद द एक्ने, रोसेरिया और फेशियल सिबोरिया. ओके. सो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर इज द स्टेफाइलोकोकस स्पेसिस की वजह से, मोर कॉमन इन द अडल्ट में मोर कॉमन देखने को मिलती है. मोर कॉमन इन द अडल्ट, more common in the adult and patient with the acne, rosacea और facial seborrhea की वजह से presentation varies, like आपका redness होना, itching होना, burning होना, foreign body sensation होना, flaky debris होना, blepharitis होना, it is the common, eyelash और loss होना. Next है concurrently cysti and the chalcesia of the lid margin from chronic inflammation of the meibomian gland. Okay. So concurrently stay see. Next is the allergic conjunctivitis. Allergic conjunctivitis, most commonly seasonal allergic conjunctivitis, also called hay fever, and rhinoconjunctivitis, मोस्ट कॉमनली सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ऑल्सो कॉल्ड हे फीवर. इसको हे फीवर के नाम से भी जाना जाता है. राइनो कंजक्टिवाइटिस एग्जांपल आईजी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड precipitated by the small airborne allergic local mast cell degranulation, release of the chemical mediator histamine, eosinophils, chemotatic factor F, PAF. ओके. सो ऑल दिस आर द फैक्टर. आईजी मेडिटेटेड की वजह से हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से हो सकती है, प्रेसिपिटेटेड बाय द स्मॉल एयरबोर्न एलर्जेंस की वजह से हो सकती है. और इस ये फर्दर कॉज करता है आपका लोकल सेल में आपका डिग्रेनुलेशन होना और रिलीज ऑफ द केमिकल्स का आपका रिलीज होना. मेडिएटर केमिकल रिलीज होता है तो मेडिएटर आपका हिस्टामाइन, इसेनोफिल्स, कीमो एक्टिक रिलीज होता है. फैक्टर आपका ए एफ पी एफ एक्सेट्रा की वजह से. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है आपका बायलेटरल प्लूराइटिस होना, रेडनेस होना, वाटरी डिस्चार्ज होना, राइनोरिया होना, कंजेशन होना. पेशेंट ऑफन हैव हिस्ट्री ऑफ एटोपी, एटोपिक हिस्ट्री हो सकती है, सीजनल एलर्जी हो सकती है और स्पेसिफिक एलर्जी की वजह से आपके हो सकती है. सो दिस इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम मैनिफेस्टेशन. Diagnosis of the conjunctivitis, clinical diagnosis of the exclusion, morning crusting of the eye. Okay. So diagnosis, first we have the history collection and physical examination. Morning crusting of the eye unreliable for the determination of etiology. Morning में आपका crusting formation होना आपकी eye में, this is the unreliable for the determining. If focal pathology, if in case focal pathology is there, hordeolum and cancerous lesions और blepharitis होना, conjunctivitis होना is reactive rather than the primary. Okay. So there is the hordeolum, means if the focal pathology hordeolum, cancerous lesion or blepharitis होना, conjunctivitis होना in the reactive rather than the primary. If redness is localized rather than diffuse, consider foreign body, pretty and episcleritis. Okay.
So what is the episcleritis? Episcleritis में क्या होता है? Inflammation of the episclera. Episclera में आपका inflammation होना, it is known as the episcleritis. Next है Pterygium. Pterygium क्या होता है? Pterygium is known as cancerous, non-cancerous growth of tissue. This is the non-cancerous growth of the tissue known as the pterygium or episcleritis. Would it? Here in the differentiate the pink eye, red eyes, cultures not necessary for the initial diagnosis and therapy of the acute conjunctivitis. It is not important for the necessary, or it is not necessary for the initial diagnosis and therapies of acute conjunctivitis. When to culture neonates hyperacute plurulent conjunctivitis, immediate gram staining, chronic or recurrent conjunctivitis, and where is it? Treatment is the viral, allergic, and viral, allergic, and non-specific conjunctivitis are the self-limited. Bacterial conjunctivitis is also likely to be a self-limited. But about treatment shortness, the courses reduce person to person spread and lower the risk of the site threatening complication. Okay, so bacterial conjunctivitis is also likely to be a self-limited. It is the self-limited. But about treatment is shortness, shorten the course, reduce person to person spread, and lower the risk of the site threatening complications. Treatment of the viral conjunctivitis, topical antibiotic not necessary because the secondary bacterial infection is uncommon. Reoccurrence that the disease may worse for 3 to 5 days before getting better and persistent for the 2 to 3 week. Some relief from the compresses and topical antihistamine decongestant. Okay, सम रिलीफ फ्रॉम द कंप्रेशन, कुछ जो रिलीफ है वो कोल्ड कंप्रेशन से आपका रिलीफ हो सकती है, एंड टॉपिकल एंटीहिस्टामाइन डिकंजेस्टेंट से रिलीफ हो सकती है. डू नॉट यूज ऑफ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड. Do not use of topical corticosteroid due to risk of the sight threatening complication is carrying corneal melting and perforation, especially if etiology is the herpes simplex virus or it is the bacterial keratitis. Okay, so do not use of topical in case topical जो corticosteroid है वो आपको यूज नहीं करना ड्यू टू रिस्क ऑफ दी साइट थ्रेटनिंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, स्कैरिंग हो सकता है, कॉर्नियल आपकी मेल्टिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, स्पेशली दी इटियोलॉजी दी हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस और दी बैक्टीरियल कैरेटाइटिस की वजह से हो सकता है. Treatment of the acute bacterial conjunctivitis, topical broad spectrum antibiotic, erythromycin. Treatment of the acute conjunctivitis के लिए क्या क्या treatment हो सकता है? तो there is the topical broad spectrum antibiotic like erythromycin ointment, bacterial bacitracin, polymyxin V ointment, polysporin and trimethoprim, polixin V and polytrim sulfa drops. Most H flu and the S pneumonia resist to the macrolides. Next, sulfa drop bleach 10 less effective and rare side effect of the 7 Johnson syndrome. Treatment is the one by 1.5 ointment inside lower the lid and 1 to 2 drop QID for the 7 days. Responses seen typically within the 1 to 2 days. Okay. Next, the treatment of hyperacute bacterial conjunctivitis, immediate ophthalmic referral, systemic and topical antibiotic, and saline irrigation. Systemic antibiotic choice due to the penicillin resistance, gonorrhea, and is a single dose. Ceftriaxone 25 to 50 mg per kg body weight, IV or IM, not exceed 125 mg per day or 125 mg
per vertebrate or single dose cefotaxime 100 mg per kg IV or IM in the neonates. If venereal disease present in teen, also treat with the single dose of the azithromycin, example 1 gram, because over 30% of these patients will have concurrent chlamydial disease. Okay. And treatment of allergies, conjunctivitis, self-limited allergens, avoidance, cold compression, topical antihistamine, vasoconstrictors. Do not use of greater than twice a week. Artificial tear, topical anesthesia, non-steroid anti-inflammatory drugs. Low efficacy. It is low efficacy prophylaxis like oral antihistamine, onset of the action बराबर days, mast cell stabilizer, onset of the action बराबर 5 to 14 days. When to refer to the ophthalmology, neonates, hyperacute pleural conjunctivitis, chronic conjunctivitis, and pain of sense of pain of blur vision and photophobia, and reactive conjunctivitis is the primarily. Okay. So it's all about the conjunctivitis. I hope you understood. If you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you for watching this. Bye bye. सो हियर यहाँ पे हमने कंजक्टिवाइटिस के बारे में देखा. इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन होना, इट इज द बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, और नॉन पैथोजन की वजह से हो सकती है, कोई केमिकल की वजह से हो सकती है, इरिटेंट की वजह से हो सकती है, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है. सो इधर ये बायलेटरल हो सकती है और यूनिलेटरल आपकी हो सकती है, जिसमें आपका कंजक्टिवा में, आपकी स्क्लेरा में इन्फ्लेमेशन होना, आपका प्लूरेंट होना, रेडनेस होना, एंड और डे में आपका डिस्चार्ज होना, ये सारे इसमें आपके साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं. चाइल्ड में हो सकती है, अडल्ट में हो सकती है. एंड वायरल में आपका मोस्ट कॉमन जो होती है कॉजेस एडिनो वायरस की वजह से, एंट्रोवायरस की वजह से हो सकती है. कम्युनिटी में, स्कूल्स में, वर्क प्लेस में, फिजिशियंस ऑफिस में यूजुअली ज़्यादा रिस्क होते हैं होने के. यूजुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फिंगर की वजह से, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से, स्विमिंग पूल और वाटर की वजह से, आपको स्विमिंग पूल के वाटर से, कंटामिनेटेड वाटर के स्विमिंग करने से हो सकती है. बैक्टीरियल का जो प्रिवलेंस रेट है 40% अडल्ट में होती है, 60% होती है पीडियाट्रिक में. एंड वायरल जो होती है 36% होती है अडल्ट में, 13% होती है पीडियाट्रिक में. एलर्जीज जो होती है 24% होती है अडल्ट में, 2% होती है पीडियाट्रिक में. नॉन डायग्नोस 24 होती है अडल्ट में, 5% होती है पीडियाट्रिक में, इंक्लूड दी एलर्जीज. ओके. सो इट्स ऑल अबाउट दी कंजक्टिवाइटिस. गुड इट. चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में. टिल द टाइम गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय.